now Bihar, I think is a cause of big concern. But can I tell you something, Supriyaji? As I was traveling through Purnia and Kishanganj, one of the things I heard from supporters of the Gadbandhan was that if the likes of Rahul Gandhi and the others keep questioning the electoral process, they said, अगर vote चोरी होना है, तो कोई फायदा है जाने? If you say this, I'm just wondering psychologically from the voter psyche perspective, if the opposition says this before voting, do you end up discouraging your own voters from going out and cast their vote? If they thought their vote could make a change, would they be more enthused than if their leader says vote की चोरी हो रही है, फिर वोटर भी सोच रहे फायदा है मेरा वोट देने का? सुप्रिया. So by that logic, Rahul, are you telling me that we should not raise an issue which stares us in the face? Are you telling me that the multiple number of people from the BJP who voted in Delhi and in Haryana and now in Bihar, or for that matter in Karnataka and Bihar, should not be raised? I think the whole principle which is given sacrosanct, and that's the real foundation of our democracy. Now, if that process is initiated, if people have more votes than they can cast, I think this needs to be talked about. Now, whether I met multiple number of people who said you're raising the right issue. So I don't know who you're meeting. I respect the fact that people may have told you that, but the reality is if there is a glaring process by which the electoral democracy of India has been. My colleague Padmaja Joshi has a question for you, ma'am. I think it's very incumbent on us to raise that issue. Oh, sure. You know, Supriya Shrinet, do you think now in hindsight, and we're already seeing examples that wherever you had a friendly fight with your alliance partners, the NDA, whoever is fighting against you, the BJP or the JDU, have a clear lead there. In hindsight, do you think you dented your chances or this was a bad decision because you're already starting with a disadvantage, 3 of your candidates disqualified of the Mahagathbandhan, and in addition, you've got 12 friendly fights? No, quite frankly, I would have preferred no friendly fights. I mean, that goes unsaid. But in an alliance politics, you will have to sometimes accommodate each other's needs. You will sometimes have to accommodate each other's aspirations. Now, having said that, should we have had friendly fights? No, we should not have had those friendly fights. But I think we respect our allies. We respect their ambition. We don't have agencies that we can force our allies to. We would never do that. But yeah, in hindsight, but I am still not. Supriyaji, I think this point needs to be emphasized on. All you had to do was fight this election. You're not bound by the rigors of governance, having to run a state machine. Why could the RJD and the Congress not come to a cohesive understanding on seat sharing several weeks before the end of nomination and the withdrawal? You were fighting almost to the last day. As a result of which, on the ground, the coalition doesn't come across as a cohesive fighting unit. Rahul, it's 9:10 a.m. in the morning. What we are still seeing are postal ballots. I am not trying to make comments or give my verdict on an election. I'm still not ready to call. No, I'm saying leave that aside. The final numbers will come later. I'm just on the question of the inability of the Gadbandhan to come up with their candidates and resolve all infighting and all this bickering much in advance. Rahul, let me answer your question. Yes. Give me the time to answer your question. In alliance politics, there will be some tug of war. There will be some pulls. There will be some pushes because that's the nature of alliance politics. And if you are willing to respect your allies, you will have to accommodate them. And sometimes you've got to show a large heart. Sometimes you've got to fight for your, seats, which is why you see the friendly fight. But quite frankly, the same bickering was in the NDA as well. And it was very out in the open. Now, perhaps because the numbers appear bigger, we are not talking about whether they are a cohesive force or not. I'm not sure if they were a cohesive force either. But in alliance politics, these things are very... Ma'am, Veera Raghav has a question for you. Veera. I take your point that in alliance politics there is push and pull, but whether that push and pull is orchestrated or is it actually coming because of alliance pressure is the question. 2 questions that were raised is that after the solidarity that was shown by the India Alliance in the SIR campaign, why was there a delay in declaring Tejasvi Yadav as the chief ministerial face A? And B, the question is also raised, and I'm looking forward to, let's say, a state like Tamil Nadu. There are possible talk, while it's very clear that the Congress and the DMK are cohesive allies, the optics of being soft on a Vijay, etc., is something that is worrying allies at some level. Would you agree? No, I think the DMK and us are rock solid. It will be foolhardy for me to start commenting on Tamil Nadu politics while we are discussing the results. I think we're very, very rock solid. There is no question of
looking outside and being soft on anyone. I think we were very, very vocal with what happened and very unfortunate what happened in the Tamil Nadu rally. Okay, Vijay. But coming back to the Bihar question that you speak about, and I think your question really is about why did we declare Tejaswi Ji? I think it was always a given. He was the deputy chief minister, and they are the larger ally. Yes, it was Okay. given that they are. Supriya ji, we'll come back to you for more in a while. Let these trends settle. Thank you for joining us this morning. I want to go across to Dilip Jaiswal. Dilip Jaiswal is the state BJP president. This election is being fought really under his leadership on the ground. 112 leads for the NDA at the moment, up 23. जायसवाल साहब, लग रहा है कि इस T20 मैच में भारतीय जनता पार्टी की धुआंधार शुरुआत हुई है. 59 सीटों पे आप आगे हो. जेडीयू एट 51. ये लड़ाई रहेगी कि नंबर 1 नंबर 2 पे बीजेपी जेडीयू में कौन रहने वाला है? जायसवाल जी, वेलकम. देखिए, एनडीए आपसी एकता के साथ, आपने देखा कि आज से 1 वर्ष पहले से ही एनडीए के 5 दल चट्टानी एकता के साथ चुनाव मैदान में आए थे. इसलिए बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, किसका फिगर ज्यादा, ये सब कहीं कोई मायने नहीं रखता है. हम सिर्फ एनडीए को जानते हैं कि इस बार एनडीए ने चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के पहुंचा दिए. सर, अब आप मुबारकबाद ले लीजिए. पहले आप ले नहीं रहे थे. मैं आपको एबीपी न्यूज की ओर से औपचारिक तौर पर मुबारकबाद दे देती हूँ. रुझानों में तो ये दिख रहा है कि शायद हमारे आंकड़े हैं. और दूसरा आपका प्रश्न था कि लोगों ने विश्वास किया नहीं बेरोजगारी का. देखिए, बेरोजगार 2 तरह के आजकल चुनाव में मिलते हैं. एक ये बेरोजगार मिलते हैं जो हर चुनाव में बेरोजगार रहते हैं, और दूसरा वो बेरोजगार है जो सही पढ़ लिख कर रोडों पे घूमता है, लेकिन उसको देखता है कि मुझे जो देने वाला है वो किस तरीके से देगा और क्या है. तो यदि वो पढ़ा लिखा है तो समीक्षा करता है कि जिन्होंने घोषणा किया वो कैसे पूरा करेंगे. तो वो जो बेरोजगार थे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, वो एनडीए की तरफ से जाते हुए दिख रहे हैं, और जो बेरोजगार हर चुनाव में होते हैं वो आरजेडी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं. कई वादों की दौर नहीं चला. कुर्सी, एक कुर्सी ये है ताकत. किसी को लुभाती है, किसी को लड़ाती है. कभी आसमान मुद्दे आरजेडी और कांग्रेस ने गलत चुन लिए. इनके जो पोल कैंपेनर्स थे, चाहे संजय यादव हो, चाहे सुनील सिंह हो, रमीज हो, ये सब लोगों ने गलत, और कांग्रेस ने भी जो स्ट्रैटेजाइज किया वो गलत किया. रोहना, मुझे लगता है 100 बात की एक बात, छोड़ दो हिंदू मुसलमान राजनीति, महिलाओं पे फोकस करो. उनमें मादा है कि वो तुम्हारी राजनीतिक तकदीर बदल सकते हैं. वो ये करके दिखा. नहीं, अभी शुक्ला जी कह रहे थे ना, सब्र का फल मीठा होता है. बीजेपी के लिए आपने ये इस्तेमाल किया जुमला. मैं कहना चाहती हूँ, सब्र का फल मीठा होता है. ये नीतीश कुमार पर भी फॉर्मूला सेट होता है, क्योंकि वो 2006 और महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए वो साइकिल योजना, यूनिफॉर्म योजना, 33% रिजर्वेशन, डोमिसाइल को लेकर उनको फैसिलिटी देना, और अब ये 10,000. और ऐसे में कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने भी बड़ी सब्र के साथ अपने लिए एक अलग वोट बैंक कल्टीवेट किया. नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के अंदर सब्र है. 2005 से लेकर 25 तक तो मैंने नहीं देखा. यदि वो सब्र करते तो पलटी नहीं मारते. सब्र करने के लिए मैं फिर से कहूंगा कि राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि जिन जगहों पर गठबंधन के साथ वो चली और पूरी ईमानदारी के साथ चली, और आज बिहार इस बात का उदाहरण है कि सब्र का फल मीठा होता है. और भारतीय जनता पार्टी स्ट्राइक रेट तो देख लीजिए. रुझानों में स्ट्राइक रेट बीजेपी का करीब 80%, 80% स्ट्राइक रेट बीजेपी का नजर आ रहा है. जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखिए आप, रुझानों में 70% स्ट्राइक रेट जेडीयू का नजर आ रहा है. दोनों पार्टियां, जेडीयू और बीजेपी, इस बार बराबर सीटों पर लड़ी. 101 सीट, 101 सीट. उन 101 सीट में बीजेपी के खाते में इस वक्त 81 सीटें जाती हुई नजर आ रही है. जेडीयू के खाते में 70 सीटें जाती हुई नजर आ रही है. और नतीजा ये आप देखिए, नंबर बदल रहा है. वो जो 160 पर नंबर पहुंचा था, वो थोड़ा नीचे आया है, और फिलहाल 149, 149 एनडीए का नंबर नजर आ रहा है. महागठबंधन जो 60 तक आ गया था, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 72 पर पहुंचा है. आदेश चले गए, क्योंकि वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए. रोहित के पास चलते और जानते रोहित अब क्या कहेंगे. ये तो थोड़ा नीचे एनडीए, महागठबंधन थोड़ा ऊपर. नहीं, कहीं नीचे ऊपर नहीं है. देखिए, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार और देश में सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ रहे. लालू जी 10 साल पावर में थे, 2004 से 14. उनको देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं दिलाया. बुड़बक बनाते हैं पिछड़ा दलित अति पिछड़ा को. मोदी जी ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, गरीबों की चिंता की, पिछड़ों को. आकाशवाणी चेतन आनंद पीछे चल रहे हैं. नवीनगर से